So area of the electrolyte dipped into the electrode, उस पर डिपेंडेंसी है. नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड कैसे यूज कर रहे हो, कौन से यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंडेंसी है. इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, उस पर डिपेंडेंसी आएगी. इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर, क्योंकि भाई सर्किट जब डेवलप होगा जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका, जितना पास में उतना ज्यादा बेटर है हम लोगों को. तो मतलब ये चार फैक्टर्स है जिन पे ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड करेगा. वही लिखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ द सेल. किसी भी सेल का ईएमएफ इस पे डिपेंड करता है. फर्स्ट लिख लेंगे पॉइंटर देने को एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट इज गोना बी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स. सेकंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. नेक्स्ट लिख लेंगे नेचर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. फोर्थ लिखिए डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, distance between the electrodes. Yeah, simple चीज है, बिल्कुल डिफिकल्ट. थोड़ा वापस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझें. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अब जैसे रेजिस्टेंस है सीरीज में लग सकता है, पैरेलल में लग सकता है, वैसे सेल वो भी सीरीज में लगा सकते हैं, पैरेलल एक साथ 4-5 सेल लगा दें. सो वी ऑलरेडी नो दैट मोर देन 2 सेल्स इज ऑलवेज अ बैटरी. दो या दो से ज्यादा सेल को लगा तो उसको बैटरी बोला जाता है. तो ऐसे 5 लगा दिए, 10 लगा दिया, कितने भी लगा दो, डिपेंड करता है यूजेज क्या उसका.